अब मैं कल मम्मा फाल्गुनी के पास गई तो संग्राम को लेके गई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता फाल्गुनी जीएसटी भरती है नहीं भरती है, बट ऐसे तो जो चार्ज किए वो मार्केट का प्राइसिंग चार्ज किया, कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं दिया। तो इनफैक्ट एजलेस से ज़्यादा चार्ज किया। तो आई एम लाइक ओके ठीक है, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर लॉन्ग, सो इट्स परफेक्टली ओके। बट द थिंग इज़ दैट उसने बिल भी नहीं दिया अभी तक। अब मैं उसका गूगल पे रिव्यू डालूंगी तो क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, बिकॉज दे आर माई ओल्ड डॉक्टर्स ना। अब ये गूगल रिव्यू मैं तब खेलूंगी जब मैं कोई कोलैबोरेशन में डील कर रही हूँ और मुझे मेरे फैंस को एक रिव्यू भी देना है, सो दैट दे आर अवेयर कि वो लोग एक जगह जाएंगे अगर मेरे नाम से या मेरे फैंस बन के, तो क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है। बिकॉज बाटा कोलैबोरेशन ये जो होती है स्किन क्लिनिक्स में, यहाँ पर आपको पैसे तो मिलते नहीं है ना एक एड इनके लिए शूट करने के लिए, आप सोशल मीडिया के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो उस प्रकार से गूगल रिव्यू देना सही है, बनता है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी भी हूँ, लोग मेरे नाम से बिल ना फाड़े। बट अभी फाल्गुनी को मैंने बोला है उसके रिसेप्शनिस्ट को कि भैया बिल भेज दे, सो दैट मेरे पास रिकॉर्ड हो कि मैंने क्या किया है, कब किया है, क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है। बिकॉज फाल्गुनी यूएस भी जाए तो भी आइडिया होना चाहिए ना। बट वही है, अभी वेट करती हूँ आज का दिन, क्योंकि उसका लैपटॉप तो चल ही रहा था। अब उसने कल मुझे बोला कि प्रिंटर नहीं है, फिर अब बोला कि लैपटॉप ख़राब है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आजकल लोग टैक्स वैक्स भरते नहीं है। तो अभी मोदी जी ने जीएसटी थोड़ा कम किया तो शायद ये लोग टैक्स वैक्स भरने लगेंगे। अभी पता नहीं ना लोग अंदर क्या कर रहे हैं, बिकॉज वैसे तो जब तार पत्री टेरेस का काम कराया तो ये छोटे बिजनेस वाले वर्कर्स कहाँ जीएसटी भरते हैं, बट स्किन डॉक्टर्स और ये सब तो जीएसटी भरते हैं। तभी वो भी नहीं भर रहे, क्या पता ना, वी हैव नो आइडिया ना व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन ऑल द बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। सरकार तो यही बोल रही है कि भाई हमने बहुत जीएसटी कलेक्ट किया, बट लोग एक्चुअली जीएसटी भर रहे हैं नहीं भर रहे, कुछ आइडिया ही नहीं है ना। प्रवीण जी थैंक यू, आपने मुझे वो सनलाइट वाला लुक का गूगल ड्राइव भेज दिया रॉ मटेरियल्स का। बट जो सेकंड चेंज है ना वो स्टूडियो लाइट वाला, वो आप प्लीज़ अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है एडिट करवा दीजिए अपनी टीम से। और अगर आपको कोलैबोरेशन पोस्ट करना है मेरे इंस्टाग्राम पे तो उसका आप बता सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू एंड योर वाइफ। थैंक यू सो मच। रूपाली हाय, इट वॉज सो नाइस टू मीट यू विद योर हस्बैंड। मेरे को रॉ मटेरियल सारा मिल चुका है एंड जो सनलाइट पिक्चर्स हैं वो मैं शायद कुडल मैगजीन को फॉरवर्ड कर रही हूँ, मगर वो जो स्टूडियो लाइट्स की फ़ोटोग्राफ्स है ना, अगर आप अपनी टीम से एडिट करवा सकते हैं तो इट विल बी ग्रेट, आई कैन यूज़ दैट फॉर अदर पर्पस। एंड अगर आपको कोलैबोरेशन पोस्ट कुछ करनी है इंस्टाग्राम पर मेरे पेज के साथ तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं पेज रखती हूँ टीम पायल रोहतगी, सो वी कैन डू समथिंग इफ़ यू आर कीन, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड होपफुली वी शुड शूट ऑल्सो, शूट कर सकते हैं बिकॉज आप भी अच्छे फोटोग्राफर हैं। ओके, टेक केयर। When we come to think about it, GST is something that was talked about a lot in the political domain because it was a tax that was levied by the Honorable Prime Minister's government, Narendra Modi ji's. But actually, how many people are paying GST? That is something we need to figure out. Because when I was dealing with layman, which is dealing with petty cash and everyday cash, I don't think they were filling GST. They were just using cash, depositing it, and that's about it. There was no GST involvement because the slab was not they were not qualifying for the slab where GST had to be paid. But then there are these certain skin clinics, doctors who are having a business, but probably or they are shifting, relocating, and they want to avoid paying taxes. And the rich people also avoid paying taxes because the rich people go to these skin clinics thinking that forget it, we are getting our privacy, we are not exposed to a lot of public. Because when you go to a clinic like Ageless, there is the VVIP crowd as well as there is the normal crowd that is coming, and they have a proper billing system at the entrance. So it is like a proper hospital, where a hospital has access to VVIP clients as well as to layman, and it's a proper billing system established. But this does not happen with a lot of other private skin clinic where we know the doctors because we have been going to them, but
they are used as places for privacy, you know. But actors like me, celebrities like me, would prefer going to a place like Ageless where there is a proper billing system, and you know, there is interaction with normal crowd also, and normal crowd also knows celebrities come there because there is a proper movement happening in terms of finances and in terms of treatment. You know, there is proper protocol being established. But the thing is, a lot of celebrities preferred privacy when they're doing these aesthetic procedure treatments. So that is why they had doctors who were not into GST, who were not into taxation, you know, or who were doing cash transactions. Because I have also bought my terrace, which was so many years back, through cash money, no? So cash money was flowing in and it was flowing out. So that's how dealings were happening, and how I earned the cash money, that I also know. Who gave me the cash money, that I also know. So how I rooted it into the terrace buying, that I also know. So similarly, the same routing is now happening probably via the rich in certain businesses where they need privacy. Because a rich person or a celebrity does not want that kind of tension when they're doing some kind of aesthetic procedure. So they kind of identify certain doctors where this GST taxation is not an issue, and they just go simply do cash transaction and come out. But I prefer bills because I want accountability कि यहाँ पे मैंने ये किया, ये procedure use किया. There is an accountability of the product that's been used on my face. There is an accountability of the doctor who has injected on my face. Now my old doctors, I know them. Okay, they are not bad people. They have obviously grown in their own pace, you know, and figured out their own priorities. Like their priorities could be family, children, you know, in-laws, and that's why they did not become a business like Ageless. Ageless became a business, but when it became a business like the way it is, they lost personal touch with the celebrities. Like today, I have a personal touch with my old doctors because that personal touch was maintained. But the taxation part and all this was not their forte because they concentrated on their family, they concentrated on their children. But on the other side, an Ageless kind of a clinic is concentrating on taxation, is concentrating on making money, trying to grab as much as customers from the layman market. But they have lost touch with celebrities who have actually helped them when they were growing because their management has taken over, you know. बट अभी आई थिंक उनके यहाँ से कोई ईमेल वीमेल आया है, सो आई विल रिवर्ट टू इट. और अगर मैं बैंड्रा जा रही हूँ देन आई डोंट माइंड ड्रॉपिंग इन एंड सीइंग द सेटअप अगेन बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ हॉस्पिटल, यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी, क्योंकि उनके ईमेल का जवाब आया है बिकॉज आई हैड सेंट देम एन ईमेल लॉन्ग बैक. Because collaborations does not mean that you have bought my Google review. Like yesterday I ordered some food from Pishu, some place. Somebody told me that it's a healthy outlet, it has got good juices and good, you know, diet based pizza and stuff like that. But the food that came to my house from a 4 bungalow outlet was pathetic. I used Swiggy Mart, it was pathetic. I ate it and I spent so much of money. I spent $1,000 on it. It was pathetic. So लोग फूड बिजनेस में पैसा बना रहे हैं by giving substandard food, and I had to give a review there because anybody who is working on a salary, for that person 1,000 rupees is important, and 1,000 rupees for a useless meal hurts. So I will give a review there, but I don't want to give reviews to my old doctors whose priorities I've understood and whose business ethics are different than those commercial business ethics of doctors who were founders of Ageless clinics, who have flourished in Bombay. Just trying to give you thought processes.